अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार कसाना। ख़ातिन हज़रात, जम्मू और कश्मीर जो है मामला, उसका आपको पता ही है कि कितना गंभीर है। उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं और आज भी हम चाह रहे हैं कि ज़रा कश्मीर के हवाले से बात की जाए और आपको अपडेट किया जाए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से वहाँ पे मामला जो है वो अबतरी की तरफ जा रहे हैं। एज ऑफ टुडे हमने देखा है कि आज तो वैसे भी स्नो वहाँ पे पड़ी हुई है। वहाँ पे जो मेन रोड्स हैं तमाम की तमाम, श्रीनगर की और दूसरे इलाकों की, वो उनको रोक दिया गया है। वहाँ पे ट्रैफिक नहीं चल रही है। तो एक तो मौसम की वजह से भी खराबी है, दूसरा जो सियासी और वहाँ पे दूसरा मौसम है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है। और उसमें एक नई डिबेट जो वहाँ पे शुरू की हुई है कि जी ऑटोनॉमी हम आपको देंगे और आपको और क्या ज़रूरत है, और आप इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं उसको आप भूल दें और सिर्फ हम आपको खुद मुख्तारी देंगे और सब कुछ ये करेंगे और वहाँ पे तरक्की आएगी, डेवलपमेंट होगी। तो वो उसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद 20 जनवरी 2021 को क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कश्मीर के हवाले से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि हम आज बात करें। और हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं जर्मनी से हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब राजीव कुमार साहब। राजीव साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजीव भाई, आपने बहुत अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे इस वक्त 6 बजे हैं, 6:30, तो आपने उठ के हमारे लिए टाइम निकाला, वो भी वीकेंड वाले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो जरा मुझे बताएं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हम जरा शुरू करते हैं तजिया कि एक तो ये है कि हमारे बैकग्राउंड में वो मौजूद है चीज़ें कि कमला हैरिस का जो बयान है और उसके अलावा जो बाइडेन साहब हैं वो भी कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ बयान उनके पहले भी आ चुके हुए हैं। तो एज अ कश्मीरी और एज अ हिंदू कश्मीरी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कश्मीर के मामले के ऊपर क्या हो सकता है? क्या कोई इनिशिएटिव्स आप देख रहे हैं हो सकते हैं, या इसको उसी तरह कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा? Before we go to Kashmir, I think we should heave a collective sigh of relief that Biden has been elected. He's now Yeah. president-elect. Because these 4 years have been extreme. Because I think people don't realize how close to disaster the world had come under Trump. हाँ, हम्म, तो अब रहा सवाल कि इसका इफेक्ट कश्मीर पे क्या होता है. So basically, what happened in last 4 years that under Trump, Indian government, Modi government in India, it got a carte blanche because Trump's anti-Muslim rhetoric, it completely aligned with Modi's agenda. So that's why they went ahead and they did in Kashmir on August 5, 2019, what they did. They removed. So now at least how much there will be material change that is that needs to be seen. But at least this will be an issue which will be discussed. There will be, this issue will be raised. Hopefully Biden administration will talk about issue of human rights in Kashmir. So we that much should be expected from that. तो आप ये जब ये बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो उनके उनके दिल के करीब है, तो इसलिए वो शायद उसको उठाने की कोशिश करेंगे। और ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है उसके ऊपर भी अगर बात होती है तो फिर तो मतलब एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा मोदी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का इशू तो वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। और कमला हैरिस ने भी इसी वजह से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। Well, we should be a little bit cautious here. We should not हम्म, raise our expectations too much हम्म, because at the end of the day, the real politics come in. हम्म, We should be, but that doesn't mean that we should be cynics. We should not become cynical, but a little bit of skepticism is fine. So the thing is that what is going to happen is that because there is, if we look in conjunction with the already
these Democratic Congress person there have been some of these Democrats who have been raising these issues. There are this Congresswoman from Seattle, and then Congresswoman Ilhan Omar, and these people have been raising Kashmir issue. There was last year a hearing on Kashmir in which some activists from both sides from Kashmir were asked to participate. So they were very clear. This representative from Seattle, she's very vocal on the issue of Kashmir. So my guess is that these people will keep Biden administration under pressure to raise the issue of Kashmir with the Indian government. But at the same time, I would be very cautious in raising any kind of expectation that there will be some all of a overnight change at the ground level in Kashmir. हाँ, लेकिन उसमें एक ये भी वजह है ना कि ये बाइडेन साहब जो हैं ये पहले भी नायब सदर तो रह चुके हुए हैं, और अगर उन्होंने कुछ करना होता या कम से कम कुछ स्टेटमेंट्स देनी होती उस तरह की बड़ी डैमेजिंग किस्म की, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडियन पर्सपेक्टिव, तो फिर तो वो पहले भी दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसी नहीं दी. ही इज एन इनसाइडर. तो वो आप समझते हैं कि बेसिकली रियल पॉलिटिक का जो है वो शिकार हो जाएंगे और वो उस तरह शायद ना बिहेव कर सकें जिस तरह के हम चाह रहे हैं. अभी तो जस्ट आई प्रे फॉर जो बाइडन, गॉड हैव मर्सी ऑन हिज सोल. जो प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए छोड़ के जाएगा, so he will have to deal with hell. The damage that Donald Trump has done to the government at every level in the United States, it's more than anyone could have anticipated. So Joe Biden, because that will be something Joe Biden will have to deal with those issues. And as we discussed last time, the coarsening of the public discourse, which has become so toxic under Trump. So that will be, but in the long run, so it will be just like Modi will not get a carte blanche. That ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा वैसे. Yes, there will be definitely a difference. This will be a perceptual difference. So, but like how much it actually, but at least there will be somebody who will be raising this issue at some point, right? And if not openly, but there will be people from that administration who will be talking to Indian government on this issue. लेकिन राजीव भाई, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि इनके आने के बाद कार्ट ब्लांच नहीं मिलेगा और उस तरह जिस तरह के ट्रंप के दौर में हो रहा था उस तरह नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल ही उन्होंने नीलम वैली में बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की है. पाकिस्तान साइड के ऊपर बहुत सारे लोगों को वहां पे हिट किया है. कुछ लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, प्रॉपर्टीज को आग लगी हुई है, हमने कई घरों को जलते हुए देखा है. तो ये तो फिर मैसेज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो दे रहे हैं, वो ये तो नहीं दे रहे कि भी हम बैकआउट कर रहे हैं. वो तो कह रहे हैं कि हम तो एग्रेसिव रहेंगे और हमारी जो पॉलिसी है वो इसको कंटिन्यू करेंगे. Yes, what they did yesterday, it's a coward act, or it's shameful. To target civilians is disgraceful. So, but yes, it might be, or maybe not, but it could be possible that they are trying to send incoming Biden administration a message. But if we remember, just before this August 5, 2019, Donald Trump had issued some off-the-cuff remark on that when Imran Khan had visited him, and and it was just like that. He said something, I don't remember the exact word. He said something that he would be ready to mediate. Mediate, huh. And
I don't know. Then it was just like they went kind of post haste. They immediately brought this August 5, 2000. बिल्कुल Was बिल्कुल it in हाँ, reaction to that Trump's remark or not? So it is possible that what they are trying to raise this temperature on the border with Pakistan, it could be just to send a just to message, up the ante, just to up the ante. just to up the ante, because हाँ, these are one should not underestimate their insincerity in these issues. So, ठीक and maybe they also at the same time, maybe they are trying to wiggle out of the dispute with China and to raise it. But in the long run, it's going to come back to haunt them. तो आपने आपने कहा कि ट्रंप जो है वो बाइडेन के लिए हेल्थ छोड़ के जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी अपने मुल्क में क्या छोड़ के जाएगा? जो भी सिचुएशन चल रही है, वो क्या उससे बेहतर होगा, ट्रंप से बेहतर होगा या ट्रंप से भी बदतर होगा? एक्सक्यूज मी फॉर द मोदी सबसे बड़ी बात है, मोदी छोड़ के जाएगा, हाँ, ये भी क्वेश्चन है। when he will leave. हम्म, तो मोदी का जो ग्रिप है कंट्री पे, दैट्स अ वाइस लाइक ग्रिप, हम्म, and the opposition in India, it has no plan. हाँ, Its opposition is completely without a plan, and it is fragmented. हम्म, And और जो this RSS machinery है, that's so huge and so deep. और उनके जो finances हैं, they are sitting on a huge wealth. So it's getting barring some miracle, barring some external threat or something like a conflict with China or any other unforeseen disaster. I don't know. I'm very skeptical about that. If there is anybody who can defeat Modi in elections. That's a especially very right now. that's a very grim reading. And so far as assuming he leaves tomorrow, he will leave a mess in India. Economy, for the first time in history, Indian economy is in recession now. In recession, deep recession. टेक्निकल रिसेशन हाँ, है, लेकिन हाँ, है दो कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर्स हैं इससे नेगेटिव ग्रोथ, सो दैट्स अ रिसेशन. हाँ, एंड अदरवाइज आल्सो जो एम्प्लॉयमेंट numbers हैं, दैट्स वेरी सैड स्टोरी. There is so much, and that's one of the reasons why there is so much they get this support for their Hindutva agenda, because they have all those people who don't हाँ, have any work, they are being lured by them. So that's तो the ये अच्छा, ये जो कश्मीर में हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में वहाँ पे अब आपका राब्ता तो रहता है, आप किसी ना किसी से डेली बात करते होंगे, उनसे जी पूछते होंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है, लोगों का क्या ख्याल है, क्या होगा उनके साथ, क्या लोग बहुत ज्यादा स्केर्ड हैं, खौफजदा हैं, क्या सोचते हैं वो अपने बारे में, हमारा फ्यूचर क्या है, वहाँ पे यूथ है, जाहिर है स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं अपने फ्यूचर के हवाले से? yeah, I mean there's a sense of resignation. हम्म, क्योंकि कोई भी एवेन्यू ऑफ रिड्रेसल नहीं है वहाँ पे अब. हम्म, So people has somehow accepted, but we talked number of times that in the long run this is not sustainable, but in the short run people have to carry out their day-to-day lives हाँ, also. ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब जैसे ऑब्वियसली, आपने अभी जिक्र किया कि कल वहाँ पे बर्फ गिरी है, तो हाँ, सो दैट ब्रिंग, जैसे अभी मॉर्निंग में मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम किसी भी बर्फबारी के बाद ये होती है वहाँ पे कि बिजली गायब हो जाती है. हाँ, तो बिजली, so this is not something, this is 2020.
When I was growing up in Kashmir, 1960s, it was the same problem. 1970s, same problem. 1980s, same problem. But there's one very important basic thing. Starting मैंने जिक्र किया 1960s, 70s, 80s और 1960s से लेके 1980s जब तक मैं वहाँ पे कश्मीर में था, the problem got worsened. Problem actually worsened every year. अच्छा. And that was actually one of the main causes of resentment against Indian government. कश्मीर में नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं, कश्मीर में पोटेंशियल है फॉर दिस पावर जनरेशन एंड और जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंप्लीट भी हुए जिनसे बिजली जनरेट हुई, those were taken over by the Indian government. अच्छा. जो एक वहाँ पे वो सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, हाँ. so that's Kashmiris don't get their share from that. So it's a This is unfair. This is very unfair. Indian government has also been depriving the resources of Kashmir to Kashmiri people. There's a bit behind this turmoil. There's an economic aspect also, which is a cause in itself. So India has never treated Kashmir more than a colony ever. So it goes back to last century actually. हाँ, तो फिर वो उसमें जो फिर बात ऑटोनॉमी की आती है, फिर ऑटोनॉमी कौन सी देंगे ये, और सेल्फ डिटर्मिनेशन तो खैर बहुत दूर. अगर आप 2020 में ऑटोनॉमी की बात करते हैं, that's a joke. There cannot be you cannot dismember a state, reduce it to the status of a union territory, and then talk of autonomy. Autonomy for what? Autonomy for the yes. What people in Kashmir need is they need independence of choice. They should be able to go out of their home without the fear of being arrested, without the fear of arrest. तो छोड़िए एक सबसे, और just आप अपने घर से बाहर जाइए, you will be definitely frisked by security forces. So किस एटॉनमी की बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट? जो एटॉनमी की बात कर रहे हैं, जो एटॉनमी का रेजोल्यूशन 19 आई थिंक इट वाज, I may be the year, I don't remember exactly, it was in late 90s. Farukdullah had passed an autonomy resolution in Jammu and Kashmir Assembly and sent it to central government. Vajpayee was prime minister and they just trashed in dustbin. So that in that resolution they had asked for the restoration of pre-53 status. So that was trashed without any consideration. That was not ever considered. So now they are talking when the state does not, when the Kashmir does not have its elected representatives, or they don't have any representation in the administration. So what kind of autonomy are they talking? It's just like, it's incomprehensible. That's ठीक है. अच्छा, ये जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला साहब के जो खानदान के सारे लोग हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, उधर से महबूबा साहिबा, सारे के सारे जो लोग हैं, अब वो किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करेंगे? क्योंकि पहले तो उनको डिच किया गया, पहले उनको बिल्कुल डिसोन किया गया, घरों में नजरबंद कर दिया गया. अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम अपने वो जो है 370 उसको वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे, 35A को वापस लेने की कोशिश करेंगे. तो उनकी पॉलिटिक्स अब क्या होगी? किस लेवल पे और किस बेस के ऊपर पॉलिटिक्स कर सकते हैं वहां पे? देखिए, जो लोग प्रॉब्लम हैं थे, they cannot be solutions. These people are these part of the problem.
and they cannot be up because इसमें कई लोग मुझसे इख्तिलाफ करेंगे कि now they are thinking of participating in the district development council election. DDC. So participating in those elections mean that you are giving legitimacy to Indian occupation, और जो इंडिया ने 2019 से किया है. So giving legitimacy. But कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो local administrative issues हैं. But at some point something has to, because the world is, we have examples in history where even there have been more repressive regimes. So then this non-cooperation is the best remedy in those Absolutely. times, in those Absolutely. times. So you should not cooperate with the oppressors. So you should not give them legitimacy. In whatever capacity they want you to. Yes, in whatever. So we should. There is there are examples from history: Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi. How Gandhi just like non-corporate. It might be. It might at that moment it might have sounded very trivial, but it was. But it makes an impact. It makes it's a just because. Kashmir में जैसे administration है, there are people who are facilitating that administration. So just simply by not cooperating with them can make a difference. अच्छा, ये जो सिचुएशन में हम देखते हैं, कश्मीरीज के लिए कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आती है? कोई कश्मीरीज, मैं कई दफा सोचता हूँ कि मैं अगर कश्मीरी हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त. मुझे कोई रे ऑफ होप, कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कोई नजर आए, उसमें क्या किया जा सकता है कि उनको कोई ऐसी होप नजर आए? ये आपको समझते हैं, आपकी बात होती है लोगों से, वो लोग क्या कहते हैं? अभी तो it's something very difficult at this moment. There is no plan at the moment. क्योंकि जो देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, they are going ahead full steam with targeting all those things that were part of Kashmiri identity. I just give you an example. अभी कुछ दिन पहले कश्मीर बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे जी. Srinagar administration issued a notice to them that they cannot hold elections until they tell that they will shun their this separatist agenda. अच्छा. They have to accept that Kashmir is part of India. So that Bar Council had to postpone its election, cancel its elections. So this is how they are targeting each and every small thing. So यहाँ एक order आज issue हुआ एक order. Those if taken separately, those look very innocuous. But if you put them together, so that forms a very sinister, paints a very sinister picture. ठीक बात. So जो और इसमें आप इसको वो मिक्स कीजिए एटॉनमी के साथ, so that's a little bit hard to digest. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में आप बीइंग ए कश्मीरी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का कोई रोल बनता है इस पूरी सिचुएशन में? In the bigger picture of things, Pakistan is a party to Kashmir problem. There can be no doubt about that. But because if India always accuses Pakistan of helping insurgents. So, but what Pakistan can do is Pakistan can raise
profile of Indian problem in international forum. हाँ, So diplomatic level. Yeah, at every international forum, they should speak about the happening in Kashmir. So it doesn't matter Kashmir. India will react to whatever Pakistan said, but let it be that, and then Pakistan should reach out to the Muslim world. हाँ, लेकिन जिस तरह आपने देखा इमरान खान साहब ने यूएन जनरल असेंबली में स्पीच किया, आप समझते हैं कि वो इम्पैक्टफुल थी, उसका इम्पैक्ट पड़ा है? Yes, definitely. Actually, Imran Khan has been quite right on this on Kashmir issue most of the time. And it is effective too? Yes, it is effective. At least people, it brings Kashmir to international level. The Kashmir problem. What else can he do? Being the Prime Minister of Pakistan, what else can he do? No, I think again we need to be realistic. So there is not much he can do. जैसे August 5, 2019 में जब इंडिया ने when India passed this act. So I remember Shahbaz Sharif was attacking Imran Khan in National Assembly. Then Imran Khan asked him, "What do you want me to do? Should I attack Pakistan? Is that an option? Should I attack India?" India, हाँ. So that's because one has to be realistic. So but I think this on this making Gilgit-Baltistan a province, that is the correct step Pakistan has taken. आप समझते हैं कि ये right step in the right direction? Exactly, because that region should not be clubbed with Jammu and Kashmir. जैसे इंडिया तो क्लेम करता है कि वो हमारा हिस्सा है. No, but Gilgit-Baltistan, there was never an ambiguity about that part, because as soon as Maharaja signed accession within 1 week Gilgit-Baltistan joined Pakistan without any issue. So on what rationale फिर इंडिया क्यों ये कहता है? अभी भी जब ये स्टेटमेंट आई थी कि हम इसको फिफ्थ प्रोविंस बनाने जा रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया था, प्रोटेस्ट आया था. इंडिया तो चाइना का पार्ट्स क्लेम कर रहा है. इंडिया तो इनका तो वो ही है कि जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट स्प्रिंग तक ये पीओ के पर इंडिया में होगा, तो दे कैन से एनीथिंग दे वांट. लेकिन आज वैसे बाय द वे आज एज वी स्पीक वहां पे इलेक्शन का डे है, गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं. और आप समझते हैं कि ये इट्स राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? वहां पे इलेक्शंस होंगे, उनकी असेंबली बनेगी, उनका अपना वहां पे एक सिलसिला बनेगा, तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल कश्मीर के इशू के लिए भी अच्छा है. It should never have been linked to Kashmir issue, because देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है अब, जिसमें आप ये पूरा वो गिलगित बल्तिस्तान जोड़ते हैं, इट्स एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट. ठीक. So this was this British sold Kashmir to Dogras. और उसके बाद they went on occupying these places, Gilgit, Baltistan, and so it was not a natural state. So this was constructed. So this has been travesty of history. So why should the people of one part suffer just because of that history? ठीक. चलो, ये तो आपने अच्छा किया कि इसमें जरा हमें मजीद एजुकेट किया, क्योंकि मैं समझता था कि पाकिस्तान का जो ये फिफ्थ प्रोविंस उसको प्रोविजनल तौर पे बनाने का जो स्टेप है, ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए. नहीं, अब काउंटर प्रोडक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कश्मीर. सो अभी तक इंडिया ने क्या किया है कश्मीर में कि और कोई चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है? सो the biggest betrayal that India did with Kashmir was on August 5, 2019. I don't think there can be anything bigger than that. So that's so अब वो इल्यूजन में रह के पूरे एक खित्ते के लोगों को डिप्राइव करना उनके राइट्स, that's not fair.
अच्छा, आज आज इससे थोड़ा सा जरा कश्मीर से हटके है, लेकिन आज हमारे जो DGIS-PR हैं, जो स्पोक्समैन हैं हमारी फोर्सेस के, उन्होंने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक डॉसियर तैयार किया है। उन्होंने ये कहा कि भारत जो है, हमारे पास सबूत हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए टेररिस्टों को भेज रहा है अफगानिस्तान से, और वहां पे 66 ऐसे बेस स्टेशन हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है। 21 ऐसे सेंटर्स हैं इंडिया, विद इन इंडिया, जहाँ पे वो लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो उसका उन्होंने डॉसियर वो तैयार किया, और उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देंगे और UN वगैरह को भी देंगे। तो आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है, ये वेल फाउंडेड होगा? I really don't have any information on that, but I think there is a policy of mutual self-destruction. So they India claims that and Pakistan claims that, but I think India has developed quite a big network in Afghanistan. So they had these consulates in all those cities bordering Pakistan. So one would think, why would they have those consulates? That so, but it cannot be ruled out. इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। It cannot be ruled out. चलें, अल्लाह ताला खैर करे। राजीव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। खास तौर पे मुझे ज्यादा आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, स्पेशली ऑन द वीकेंड। और आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, और गपशप होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank शुक्रिया। you. थैंक Thank यू। you. Bye bye.